Everyone, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, subject Financial Accounting, and our today's topic is Introduction to Company Account. First of all, I would like to welcome you all in your semester 4 for the subject Accountancy and Financial Management 4. Here you have most important 4 topics for your examination purpose. The first topic will be the same, which we are going to learn a little from this topic today onwards, that is introduction to company account. Here we have introduction of basic terms, that is types of companies, nature, formation of companies, shares, debentures and share capital, reserves and surplus, types of assets and liabilities. Then we have dividend, then we have format of balance sheet as an theoretical part. That means from this chapter, more or less the question will be asked only for the theory purpose, that is for short notes and for your MCQ type questions, or you can say the objective questions which is asked for 20 marks. There is different modes of IPO, that is initial public offers. What are the different modes of IPO? Then you have private placements, preferential, then rights, then ESO, then we have sweat equity, then escrow account and issue of shares at par, premium and discount. You already know this. Then we have under subscription and over subscription of shares. Then we have forfeiture of shares and again reissue of forfeited shares. Like forfeited share को reissue कैसे करते हैं वो भी हमको यहाँ सीखना है. We have issue of share for consideration other than cash, as in only as a theoretical part. You already done this, that issue of shares. Many from you all has skipped that chapter in 12th standard. 12th standard में भी आपको ये issue of shares वाला chapter था. बहुत सारे लोगों ने वो skip कर दिया होगा. But here you have to learn it basically. Like आपको ये पढ़ना ही है, because आगे आने वाले chapters के लिए this first chapter is very much helpful. If you are knowing complete introduction to company account, that means you are knowing everything about the forfeiture, everything about the shares and debentures. And if you are knowing about the shares and debentures, it will be easy for you all to redeem the preference shares and to redeem the debentures, which is your next continuing chapter. After this introduction to company account, there is three more chapters. Among all 3 chapters, the first one is redemption of preference shares and the other one is redemption of debentures. Now we are talking about the content, the syllabus. So the first topic is your introduction to company account. In that we are going to learn the basic terms about the types of companies, nature, formation. I already told you. Then we are going to learn the issue of shares. Issue of shares may issue at par, premium and discount, under subscription, over subscription of shares. Then we learn forfeiture and reissue of forfeited shares, issue of shares for consideration other than cash, everything. Then we are learning in this chapter only issue of debentures. Then first we are knowing what are the types of debentures. You already done in organization of commerce. ये वाले सब भी आपने already किया होगा, issue of debentures. Then issue debentures at premium and discount. Then issue of debentures vehicle part. Not more than that. After that, in your syllabus there is second chapter, that is redemption of preference shares as per the section 55 of Companies Act 2013. शेयर्स और डिबेंचर्स को कैसे हम लोग रिडीम करते हैं, उसमें you have to you already know there are 2 types of shares, that is equity shares and preference shares. और जहाँ तक redemption की बात है तो सिर्फ और सिर्फ preference shares का redemption करते हैं. You already know these things. Okay, then in the second chapter basically we are going to learn about how to do the redemption on preference shares. Preference shares का redemption कैसे करना है. There are some methods of fully paid preference share as per the Companies Act 2013. Then we have to learn the proceeds of fresh issue of the shares. Then we have to learn capitalization of undistributed profit, combination of both, that is undistributed profit as well as the fresh issue. Then we have to calculate the minimum fresh issue to provide the fund redemption, that is to prepare the balance sheet. All these things. Then the company is governed by the section 133 of Companies Act 2013 and comply with accounting standard prescribed for them. Hence the balance sheet in security premium account not to utilized for the premium payable redemption of preference share. We are going to see all these things in a calculation manner. ठीक है,
कैलकुलेशन मैनर में आपको ये सारी चीजें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज इन सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न. आफ्टर दैट वी हैव थर्ड चैप्टर, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो as per the provision of section 71 subsection 1 and subsection 4 of Companies Act 2013, creation and investment of DRR, that is debenture redemption reserve, which includes the companies, that is share capital and debentures rule 2014, the methods of writing of the discount, loss on issue of debentures, terms of issue and debentures and all. Then we have methods of redemption of debentures by payment of lump sum or by the payment of installment, excluding by purchasing of the purchase in open market. Then we have conversion also, like at a time of redemption of debentures, we are going to convert all the debentures into shares. Okay, so वो एक चीज भी आपको यहाँ पे पढ़नी है. Again we have to prepare the new balance sheet after the redemption. After that, the last chapter is ascertainment and treatment of profit प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के पहले का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर चैप्टर नंबर 4. सो ये सब सिर्फ मैंने आपको ऊपर ऊपर से इसलिए बताया क्योंकि जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तभी वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल. पूरा इन डिटेल हम तब करने वाले हैं. नाउ फॉर टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू ओनली द बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी. ठीक है, बेसिक आपको फीचर्स मुझे कंपनी के बताने हैं. इट्स, यू कैन से इट्स ओनली अ रिविजन पार्ट विच यू ऑलरेडी डन इन लाइक द theoretical part of this chapter, that is introduction to company account, you already done in 12th standard. Today we are going to do only the revision part. ऐसा आप बोल सकते हैं कि सिर्फ ये आपके रिविजन पार्ट का हिस्सा है. We have the meaning. देखो, मीनिंग पढ़ते से ही आपको पता चल जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट हूम, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. Incorporated association of person having a separate legal existence with a perpetual succession, a common seal. Its capital being divided into shares which are freely transferable along with the owner having limited liability, and its artificial person created by law. Yes girls, I'm talking about joint stock company. Joint stock company के बारे में मैं बात कर रही हूँ. Yes, it is the company under the Companies Act. Like एक और definition which is given in your textbook, that is a corporation is an artificial being, invisible, intangible and existing only in the completion of law, contemplation of law. सिर्फ और सिर्फ वो हमारी किताबों में होता है, ठीक है, बट होता है. हाँ, so that this is considered as your joint stock company. उसको आप joint stock company बोलते हो. Joint stock company के there are some important features which I am going to tell you here. Like, see the first feature. First feature is separate legal entity. It has an existence. यानी यहाँ पे ये अलग से बॉडी, अलग से आपके लिए बॉडी कॉर्पोरेट है. A company, it has existence entirely distinct from and independent of its members. It can own property and enter into a contract in its own name. It can use, sue and can be sued in its own name. No member can directly claim the ownership right in the assets of the company. ठीक है, यानी यहाँ से ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, आपको पता है ना कैसे फॉर्म होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी? बाय इशूइंग द शेयर्स. इशूइंग द शेयर्स मतलब दो टाइप के शेयर इशू करेगी. कौन से दो टाइप के शेयर इशू करेगी? एक आपको प्रेफरेंस शेयर्स, एक आपको इक्विटी शेयर्स, ऐसे करके दो टाइप के शेयर्स इशू करेगी. और जैसे जैसे जो भी पर्सन लाइक ये शेयर्स खरीदेगा वो पर्सन उसका मेंबर बनता जाएगा. ठीक है, सो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एंटिटी. अपनी एंटिटी से ये बिल्कुल अलग अलग, अपने मेंबर एंटिटी से और इसकी एंटिटी, दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है. A company is an body corporate having its own name, like उसका अपना एक नाम होता है. A company has an independent existence apart from its members, like उसके members के अलावा उसका अपना भी एक वजूद है, ऐसा आप कह सकते हैं. This was confirmed by the House of Lords in the famous case of Solman and versus Solman Company Limited. Its assets being belong to the company such as not to its members. The company and its members can sue each other. ठीक है, अगर आपको पता होगा तो
सोलोमन वर्सेस सोलोमन करके एक कंपनी थी जिसके मेंबर्स ने ये दावा किया था कि ये कंपनी जब बंद होगी तो उसके के सारे एसेट्स जो हैं वो उस ओन मेंबर्स को मिल जाएंगे, वहाँ के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मिल जाएंगे, बट शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे सोलमन कंपनी जो है वो जीत गई थी और जो मेंबर्स हैं उसके, जो शेयर होल्डर्स हैं उसके, वो हार गए थे, बिकॉज कंपनी का अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, a member is not liable for the acts of the company and vice versa. Like अगर कोई member जो है वो कंपनी के एक्ट के लिए लाइबल नहीं है, इन वे कंपनी भी मेंबर के एक्ट के लिए लाइबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, if a shareholder of this joint stock company is someone who is involved in some illegal activities, so company is not responsible for that. And if the company is involved in some illegal activity, and for example Mr. X is buying some share of that company, so Mr. X is also not liable. Mr. X is not liable, he is not punishable just because the company is doing some illegal activities. So the separate entity is there for the joint stock company and for its members. Next one, we have artificial legal person. Everybody is knowing that the company is an artificial legal person created by the process of law. A company can exercise all the functions of incorporated company under the Companies Act. It has a power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue, to be sued by the other company name. That means it's an artificial person. It is an intangible and invisible, having no body no soul. ऐसा कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता, क्योंकि उसको लॉ ने बनाया होता है, तो वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता, बट इट इज हैविंग सम लीगल एंटिटी like a natural person. It has the rights and obligations in terms of law. ठीक है ना, टर्म्स ऑफ लॉ में उसके कुछ अपने राइट्स होते हैं, कुछ अपने उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं। नेक्स्ट फीचर विल बी, we have perpetual existence. Acha, perpetual existence means since the company has an existence independent of its members, it continues to be existence despite the death, insolvency or the change of its member. It enjoy the perpetual succession. That means the permanent existence. That means it will never die, है ना। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू बच्चों मुझे बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर कौन है, तो यू ऑल कैन से मिस रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर इज मिस्टर धीरूभाई अंबानी, है ना, वो है। सो यहाँ पे कैसे धीरूभाई अंबानी इज देयर? No, he is not there, but still the company is there. इंडस्ट्रीज तो चल रही है, वो थोड़े ही मर गई। सेम वे उसके जो मेंबर्स लाइक जो उसको चला रहे हैं, कल अगर वो भी नहीं रहे तो भी ये कंपनी रहने वाली है। So perpetual existence means a company enjoy a continuous existence in its life, not affected by the death, insolvency, etc. The company die only through the legal process of winding up, है ना। अगर लीगल प्रोसीजर करके कंपनी को बंद कर दिया, लीगल प्रोसीजर से जैसे चालू किया था वैसे अगर कंपनी बंद कर दी तो ही ये कंपनी बंद होगी, और एल्स इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट वन विल बी लिमिटेड लाइबिलिटी. Members' liability is limited to the face value of the share subscribed. Obviously, यहाँ पे limited liability का मतलब ही यही होता है कि ना हर एक मेंबर की लाइबिलिटी उसके परचेजिंग फेस वैल्यू ऑफ द शेयर तक ही सीमित रहती है। दैट मीन्स इफ अगर कल को रिलायंस बंद भी हो जाए, तो अगर मेरे पास जितने शेयर्स हैं रिलायंस के, से फॉर एग्जांपल मैंने 10 शेयर खरीद रखे हैं, एक शेयर 10,000 रुपए का है, तो कल अगर 500 करोड़ के टर्नओवर वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, मुझे ओनर ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट रिलायंस या बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट रिलायंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कहाँ तक फर्क पड़ेगा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ माय नंबर ऑफ शेयर, या मेरे वैल्यू ऑफ शेयर तक ही फर्क पड़ने वाला है। सो द लिमिटेड लायबिलिटी वाला वन मोर फीचर इज एडेड इन द joint stock company. The personal property of the members cannot be attached to satisfy the claims of the creditors to the company, है ना। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी अटैच नहीं हो सकती। यानी कल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती है, तो उसमें अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बैंकरप्ट हुई है और बैंक वाले रिकवरी के लिए जा रहे हैं, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एसेट्स को बेच के अपनी रिकवरी कर सकते हैं, वो मेरे घर आके मेरे एसेट्स को नहीं बेच सकते। क्लियर? सो विद दिस फीचर्स द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वर्किंग। नाउ द नेक्स्ट फीचर विल बी
So the next feature will be transferability of shares. The shares of public limited company are freely transferable. That means अगर शेयर होल्डर में से किसी को वो उस कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए तो he can do the freely transfer of the shares. Like आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर खरीद रखे हैं बट अभी आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो यू कैन सेल इट टू एनीवन एल्स, okay, or you can sell give back to the company. So the shares of the joint stock company are freely transferable. They can be purchased and sold through the stock exchange. Stock exchange से भी उसके थ्रू easily कोई भी कभी भी, like आपके पास अगर bundle of money है तो you can buy the shares of any company at any time with the help of stock exchange. Every member is free to transfer his share to anyone with the consent of other members. Okay, like दूसरे member के consent के बिना anyone can freely buy the share or sell the shares. Next feature will be corporate finance. Joint stock company raised a huge amount of capital by issuing the shares. There is no limit in the number of members in a public limited company. The another feature which we are having is common seal. I'm not going to include that feature over here because that common seal feature is very easy. In fact, you all are knowing that each company has a common seal, which is like as a signature. Any authorized person put a seal on a paper or the document to its legal evidence of an act done by the company. Under section 12 subsection 3b of Companies Act 2013 states that every company shall have its name engraved liable to characteristics of seal if any. The word if any added, the Amendment Act of 2014 implied that the optional for the company to have a common seal. That means वो company common seal रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है. Like mostly हर एक organization is having its own common seal. हर एक के पास उनका अपना एक common seal होता है जिससे प्रूव होता है कि like वो जो company है वो liable है, यानी किसी चीज के लिए उसकी अपनी एक legal separate entity है. Thus in the next video we are going to see the more about introduction of company. We are going to see the types of a company, like basic types, that is private company, public company, what is OPC, that is one person company, definition and rules and regulations accordingly. Now यहाँ पे आपको private company के बारे में बहुत थोड़ी सी चीज मालूम करने की जरूरत है. That is under section 2 subsection 68 of Companies Act 2013 as an amended in 2015 defined as private company as a company by its article restricted to the right of transfer of its share. यानी जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकता, लाइक फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते जिस कंपनी के शेयर, उनको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं. और जिनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गए उनको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं. द कंपनी लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन इज सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 71. अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and having a minimum paid up share capital is prescribed as considered as a public limited company, and the other one is private limited company. Again the thing what we are having in private limited company is